Good evening, it's 8 o'clock, you're watching NDTV. Our lead story tonight, well, a key Congress meeting in the national capital over Amethi and Rai Bareli. The Congress Election Committee meeting will begin shortly in the national capital. This is a suspense over Amethi and Rai Bareli continues. And Smriti Irani, in fact, just today mounted an all-out attack on Rahul Gandhi, saying that he ran away from Amethi and his loyalties are shifting and he is changing families. Meanwhile, Mallikarjun Kharge hit back. He said the people of Wayanad wanted Rahul Gandhi to contest from there. The big question, will the Gandhis now enter the poll fray to win back citadels like Amethi? Will Priyanka Gandhi make her election debut from Rai Bareli? So those are some of the big questions. We'll be going across to our reporter live. Ghazali is joining us from the Congress headquarters here in the national capital. But before that, listen in to what Smriti Irani had to say and how Mallikarjun Kharge responded. इन लोगों ने वर्षों वर्ष रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन घर परिवार की महिलाओं को खुले में शौच करने से आजादी मिली, एक शौचालय नहीं बना पाए। रिश्तों की दुहाई इतनी थी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए। जनता कहाँ पूछती है, वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। And Mohammad Ghazali is now joining us live. In fact, these are live pictures that we're bringing to you from the national capital. The Congress Election Committee meeting likely to begin shortly. So Ghazali, going across to you, Rashid Kidwai, in fact, is also with us on the program tonight. But Ghazali, what's happening on the ground? What are your sources telling you? The big question, of course, is will the Gandhis fight to wrest back the key Congress citadels? See, the discussions will be held for Amethi and Rai Bareli, as being told by the senior party leaders. That is why this CEC meeting is happening. And as always, the feedback from the ground or the local party leadership within Uttar Pradesh have been suggesting and conveying the top leadership that the Gandhis should not lose connection with Amethi and Rai Bareli, both being family bastion for decades. And in politics, we have seen in different states when tall leadership have never left their own bastions even in the worst of the worst crisis. So this is exactly what most of the party leadership has been suggesting. And while Rahul Gandhi fought from Wayanad in 2019, it also helped Congress in Kerala in the Lok Sabha elections in 2019. But this time around, Smriti Irani is trying yet again to make this contest very personal, and it will be a challenging task for the leadership here, who will be holding this meeting after a short while to discuss and reach a conclusion over tonight whether Mr. Rahul Gandhi should be fighting from Amethi or whether there should be somebody else from the Gandhi family to fight on either of the seats. So a meeting will only confirm that what has been concluded in the meeting, but the local leadership within Uttar Pradesh has conveyed that Gandhi family should not lose touch with these 2 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh. Ghazali, are there prominent faces arriving? What's happening there? Mallikarjun Kharge also expected there. Yeah, Mallikarjun Kharge is also expected to arrive. We saw Mr. Salman Khurshid, Pratap Bajwa from Punjab, because even 8 seats from Punjab are also under discussion today for this meeting. So we also saw other leaders, senior Congress leaders arriving. They're all waiting for Mr. Kharge's arrival, and perhaps after that the meeting will start and deliberation and discussion on Rai Bareli and Amethi seat will also begin. Right, Ghazali, thanks very much for joining us with that update there. Rashid Kidwai is also joining us live on the 8 o'clock news tonight. Rashid Saab, how do you see this delay in the announcement of candidates for Amethi and Rai Bareli? What is the great conundrum within the Congress? Of course, there were internal surveys conducted as well. What is the Congress trying to gauge here before announcing the candidates?
Thank you, Vedant. I think fundamentally it's a winnability. In electoral contest, nobody gets in just to, either for private purpose or to, enthuse the party worker, because ultimately, end of the day, contestant must win. There is no silver medal in politics. Today's meeting, essentially, from my understanding, is about Punjab. It's not so much about Amethi Raebareli. There is a hype from the ruling party, from the BJP, which is very unusual because this is the internal matter of the Congress. As I see it, this is a very clever ploy by bringing Rahul constantly for Amethi battle, is to make 2024 election, the remaining part of it. But there are over 300 seats to go around. So make it into a Rahul versus Narendra Modi battle, and that's a easy beat for Mr. Modi. I don't see a rationale or a logic in Rahul contesting for Amethi, because as per parliamentary convention, he can only retain one seat either for Vadiad or Amethi, provided he wins for both. So therefore, he will have to, cut a sorry figure in one of the places. I mean, people will get That's an interesting point you're making, Mr. Kidwai, because, every time, even in the state assembly elections, every time we've seen that the Congress tries to sort of project a Rahul versus Modi fight, that bid falls flat on its face. And, the electoral losses have shown that. But do you think the Gandhi is entering the poll fray? Will that enthuse the cadre on the ground, as we saw in the case of Akhilesh as well? There was a lot of excitement with Akhilesh Yadav finally deciding to contest from Kannauj. Yeah, so Akhilesh case is different. I think Akhilesh has a strong, prospects of winning that Kannauj seat. I think there's Akhilesh pressure also on the Gandhis, because when this alliance took place, obviously Akhilesh Yadav expects one of the Gandhis to contest. So I see more chances of Priyanka Gandhi contesting from Raebareli. But there is also a problem of campaigning, because these two are the key campaigners of the Congress. You look at Priyanka today, she was in one place and another, and Rahul Gandhi, they're doing this. Now, if they fight Amethi and Raebareli respectively, they will get, there's a lot of hard work that is required. So they will not be able to, fan out in other parts of the country. So from third phase to the fifth phase, when Amethi and Raebareli go to polls, there are about 240 Lok Sabha seats that will, that will go. So it's a very difficult call on that count also. I think Rahul Gandhi may not like to contest in this scenario, because he will have a choice. And if you notice, whether it is Smriti Irani or the entire BJP leadership, there is a lot of inspired league that is happening. Only Gandhis know that whether they will contest or not. From Mallikarjun Kharge's point of view, he has just conveyed to them that he would party wants them to contest, but it is going to be Gandhi's call whether to winnability certainly the most important aspect that the Congress is looking at before finalizing candidates for both Amethi and Raebareli. But my last question to you, Mr. Kidwai, very quickly, this time around we've seen on the ground as well, there is no national sort of wave to the elections. There is perhaps local issues have become more important in states like Rajasthan, Uttar Pradesh, even in states like Bihar. Local issues are sort of gaining more prominence as far as the election narrative is concerned. So do you think the Congress should bank on that, as opposed to going back to the larger narrative of a Rahul versus Modi fight? Or perhaps Rahul Gandhi himself has projected that he is fighting a higher fight with the Bharat Jodo Yatras, and that perhaps choosing to stay away from the electoral battle. I think, Vedant, you have raised a very pertinent issue. This election, in that sense, is being fought from a Congress point of view with a very localized manner on local issues, caste combinations, etc. The moment Rahul Gandhi joins from an extra seat, extra in the sense other than Vadiad, it will be a projection of Rahul Gandhi as a prime ministerial candidate. Right. And that is what Mr. Narendra Modi and BJP want. Remember, the India Alliance has been very careful. Consciously, it has dug. There were within India Alliance also, there were a lot of proposals were there to project, when Nitish Kumar was part of it as a convener or the chairman of India Alliance, and then Mallikarjun Kharge's name was also mentioned. But the entire India Alliance has avoided that question, because they know that if Modi versus some individual, then Mr. Modi's popularity would, he would hugely score over it. Absolutely. And therefore, I don't see, again, I would repeat, this is my assessment, and I think go wrong, because Gandhis, don't tell these things. I don't see Rahul Gandhi joining fray, because if you look at the cost, benefit thing, it is zero. Right.
Absolutely. Mr. Kidwai, thanks very much for joining us with your analysis, with your perspective there. Of course, Mr. Rashid Kidwai has covered many general elections, covered the Congress very closely as well. Thanks very much for that. But moving now to the other big headline from Maharashtra. Well, some minority trouble for the Congress in this key political state, with Naseem Khan, a top minority leader from the state, resigning as the star campaigner. In fact, there was an attempt to reach out to him as well by the Congress and the Mumbai Congress chief as well. He is upset over Muslims not getting tickets across the 48 seats in the state. Take a look. ये कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और 4 बार विधायक रहे और 5 बार मंत्री रहे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो इस समय खुद मेरे साथ हैं, और इसी वजह से नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस के स्टार प्रचारक समिति से भी इस्तीफा दे दिया है। सर, बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है और बहुत बड़ा एक तरह से आपने आरोप इस तरह का लगाया है कि मुस्लिमों को उम्मीदवारी नहीं जा रही है और इसका भारी दबाव है आपके ऊपर। नहीं, ये मेरा आरोप नहीं है। महाराष्ट्र के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के, उत्तर भारतीय समाज के जो पदाधिकारी हैं, संगठन हैं, ये उनकी आवाज़ है। ये वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस को हमारा वोट चाहिए और हमारा प्रतिनिधि 48 में से एक भी क्यों नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2 दिन से काफ़ी पूरे मुंबई, महाराष्ट्र से, विदर्भ से, मराठवाड़ा से, कोंकण से, पश्चिम महाराष्ट्र से अलग अलग संगठनों की ये बात आ रही है और नाराज़गी जता रहे हैं मुझे। तो मैंने भी सोचा कि जब इतनी तीव्र नाराज़गी है लोगों में, समाज में, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रचार समिति के पद से इसमें इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे आज, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। 48 लोकसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 1-2 हमेशा अल्पसंख्यक समाज हो, हिंदी भाषी समाज हो, उनको देने की परंपरा महाराष्ट्र में रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है कि सभी समाज को बराबर का दर्जा देना, सबको प्रतिनिधित्व देना, ये हमेशा से कार्यशैली पार्टी की रही है। इस बार आखिर क्या मजबूरी थी कि जो ना कोई अल्पसंख्यक समाज का चेहरा आया, ना कोई हिंदी भाषी उत्तर भारतीय चेहरा आया। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेके लोगों में जो नाराज़गी है, उसको लेकर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के आला कमान को सारी चीज़ों से अवगत कराऊं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। नो, दैट इज रॉन्ग। नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी की आघाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन ली है। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग। अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले, उसमें वो करेंगे। हम, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है। मेरा फादर जो है जब अध्यक्ष बने थे, मेरे फादर जब खासदार वो हम लोग एमएलए के तौर पर हमेशा मैंने देखा है कि असलमाई फैमिली करके हमारे साथ उपस्थित रहे। तो मैं ये चाहती थी, मैं आज उनको छोटी बहन करके मिलने को आई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन मैं उनकी छोटी बहन नहीं हूँ। हमारा रिश्ता घरगुती रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है। तो मैं उनसे मिलने आई। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है, आप आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया गांधी जी के वफादार सोच के कार्यकर्ता है, आप आइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए आने वाले इलेक्शन में मेरे साथ। Prominent Congress minority leader Naseem Khan has now expressed his infuriation over the party not nominating a single Muslim leader from the 48 Lok Sabha seats in the state. And also meetings of Congress leader and Varsha Gaikwad have now begun with Naseem Khan to solve the matter, whereas Mallikarjun Kharge has too hinted out at adjustments being made in the Rajya Sabha. But the bigger question here is, will Congress be able to hold on to its 1.5 crore Muslim vote bank in the state, or mislay it all for the sake of its alliance? With video journalist Jeetu Wagmare, Ms. Sujata Dwivedi for NDTV 24/7. And staying with news from Maharashtra, well, Chhagan Bhujbal has done it again. This time he says that, well, he's hurt over the delay in ticket announcement as far as the Mahayuti or the NDA in Maharashtra is concerned. He also says that there is a sympathy factor towards Uddhav Thackeray and Sharad Pawar. In fact, in a provocative statement, he says that 400 Par is creating fear and confusion. Take a look.
राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए को अगर बहुमत मिल गया तो संविधान बदला जाएगा। जो 400 पार की नारे की चर्चा हो रही है, क्या उस नारे की वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान होता आपको दिख रहा है? ये प्रचार जो है अपोजिशन का, ये तो जोर में है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि 400 पार जो बोल रहे हैं वो सिर्फ संविधान बदलने के लिए है। और कोई कर्नाटक में कोई सांसद था, कोई बीजेपी का लीडर, वो भी एक बार बोल चुका कि हम संविधान बदलेंगे। हालांकि मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई संविधान इतना हमारा मजबूत है कि खुद अंबेडकर साहब भी अभी नहीं बदल सकते, इतना है। मगर अब ये प्रचार जो है लोगों में हो रहा है कि ये संविधान बदलने की बात होगी, ये प्रचार हो रहा है, ये सही बात है। अब इसका कितना परिणाम लोगों में हो रहा है, ये तो जब बैलेट बॉक्स खुल जाएगी तो मालूम पड़ेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को? क्योंकि आप जमीन के आदमी हैं, आपको पता है कि जमीन में क्या हो रहा है। एक बात है कि जिस ढंग से जो है उनकी रैलीज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है सहानुभूति जो है, जो उद्धव ठाकरे का जो है शिवसेना टूटा या इनका एनसीपी का एक गुट इधर, तो लोगों में उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति की जो है लहर है। और इससे जो है उनकी रैली जो अच्छे हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो 2014 में 2019 में जो बिल्कुल फेल होते थे, ऐसी बात तो नहीं लग रही है। मगर फिर भी लोगों का जो है विश्वास तो है मोदी साहब ही सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार के लिए मोदी साहब चाहिए। Meanwhile, news now from Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav has hit the campaign road to win back Samajwadi citadel, Kannauj. Remember, Kannauj has been a Samajwadi Party bastion with Mulayam Singh Yadav, Dimple Yadav, all these strong Yadavs contesting from Kannauj. And this time as well, earlier Akhilesh Yadav had fielded his nephew Tej Pratap Yadav, but finally deciding to throw his hat in the ring and contest to enthuse the cadre on the ground. And he held a roadshow there as well, just a few days after filing his nomination. Well, Akhilesh Yadav's roadshow, as you can see here, he's holding a massive roadshow in Kannauj, and you can see his supporters all around. You can see over there Akhilesh Yadav going down inside the truck over here. This is the truck that's going on along with Akhilesh Yadav's roadshow. He's going to contest elections from Kannauj. He himself is in the poll battle now. I'd like to speak to one of his supporters. आपका नाम? जी अनुराग यादव। अनुराग जी, आपको कैसा लग रहा है कन्नौज से? ये समझ लीजिए जिस जगह पे आप खड़े हैं ये अखिलेश यादव की भूमि बन चुकी है। यहाँ आने से पहले अखिलेश यादव इस फॉर्म में आ चुके हैं कि उनके आने से पहले सुब्रत पाठक जी ने जो यहाँ के अपोजिट खड़े हुए, उनकी इतनी भयंकर हार होने वाली है। 6 गेंद में 1 ओवर में 6 गेंद होती है, 6 बार आउट होंगे वो। अखिलेश यादव की जो तब्दीली दी जा रही है इतनी भयंकर हो रही है कि आने वाले समय में भाजपा का बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है। You saw the enthusiasm in the reporters. I would like to show you the number of supporters that have gathered here. This is a very long road show that is going on, and of course Akhilesh Yadav contesting from Kannauj, himself entering the poll battle, the poll ground. He has been a member of parliament from Kannauj thrice, and in 2019 Subrat Pathak won by a margin of 12 to 14,000 votes against Dimple Yadav, but this time Dimple Yadav is fighting from Mainpuri. Akhilesh Yadav himself entering the poll battle from Kannauj to take back his family bastion. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV. Welcome back. In now news from Maharashtra. The BJP has decided to drop Poonam Mahajan from a key Mumbai seat, the Mumbai North Central seat, and replace her with Ujjwal Nikam. Remember, Ujjwal Nikam is one of the most high-profile lawyers of the country. He was a public prosecutor in the 2611 terror case as well. He spoke exclusively to NDTV, saying that, well, he will work together with Poonam Mahajan for the constituency. Take a look. हमारे साथ है मशहूर वकील उज्जवल निकम जी, जिन्हें बीजेपी ने उत्तर मध्य सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई कि आपको बीजेपी ने उम्मीदवार अपना बनाया है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉयर का सफर और फिर एक पॉलिटिकल सफर कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि राजनीति मेरे लिए बहुत एक नई है, लेकिन जिस आत्मविश्वास से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री
अमित जी, नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी और महाराष्ट्र के देवेंद्र जी, बावनकुळे जी और आशीष जी, इन्होंने मुझ पर जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा कि मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा और आपका भी सहयोग पूरी तरह से चाहूंगा। जिम्मेदारी बड़ी है, कहते हैं राजनीति में कीचड़ फेंका जाता है, कीचड़ में आदमी सज जाता है। आगे। कैसे आप इसमें अपने आप को समय हनुमान जयंती का मेरा जन्म है, मैं पॉजिटिव काम करता हूं और पॉजिटिवली थिंक ओवर करता हूं। All right, let's cut across live to where the Prime Minister is addressing a public meeting in Goa. Take a look. जनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे, बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी एसटी ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर रहा था, तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथ राव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य है, गोवा के चर्च भी उतने ही खूबसूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।